solving simultaneous linear equation by elimination method. Now elimination method means we will eliminate the either the term of x or term of y from both the equations. From both the equations, by solving both of them, we will eliminate either term of x or term of y. And for that, you have to write both equation in this form. Ax plus by equals to c. You will write both the equations in this form if they are not in this form. It is clear. Now, for example, question number 2, first part. 3/4 into x minus 2/3 into y equals to 1. Now, this equation is not in this form. What will you do? You will take the LCM. So, what will be the LCM here? Who can tell? LCM will be 12. 12. So 4 3 ja, so 9x minus 3 4 ja, so 8y equals to 1. So 9x minus 8y equals to 12. This is the first equation. It is clear. Now see the second equation. 3x upon 8 minus y upon 6 equals to 1. So here what will be the LCM? LCM will be 24. So 3 3 ja 9x. So what will be 9x minus 4y equals to 24. This is the second equation. Now these are the two equations. Now after this, what will you do? Now you will focus on these two equations. One equation is this and the other equation is this. It is clear. Now see here. Here you can see. Wait for a minute. Now here you can see the coefficients of x and y. Here coefficient of x is 9 and here also it is 9. While here coefficient of y is -4 and here it is -. So see here for elimination method, what will you do? Either you eliminate the term of x from both the equations or you eliminate term of y. या तो x के टर्म को eliminate करेंगे या y के टर्म को eliminate करेंगे. And how will you eliminate? By equalizing the coefficients, by making the coefficients equal. कोफिशिएंट्स को इक्वल बना के एलिमिनेट करना है. समझ में आया? तो अगर यहां पर देखें तो तुम देख ही रहे हो कि x के कोफिशिएंट्स क्या है? इक्वल है. दे मे डिफर इन द साइन बट हियर दे आर सेम इन साइन आल्सो. यहां भी 9x है, यहां भी 9x है. सो व्हाट विल यू डू? यू कैरी द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन इन बिटवीन बोथ. You carry the process of subtraction in between both. So see here from 1 and 2. One is 9x minus 8y equals to 12. And what is 2? 9x minus 4y equals 24. 24. सब्ट्रैक्ट जब करेंगे
तो नीचे वाली इक्वेशन के क्या होते हैं, साइन क्या होते हैं, चेंज किए जाते हैं. We will change the sign of this second equation. So here there is plus, so you will make minus. This you will make plus, and this is minus. So 9x minus 9x cancel. Minus 8y plus 4y minus 4y equals to minus 12. So what will be y? 12 upon 4, that is 3. Y equals to 3. Now you substitute this in equation 1 or in equation 2. In any one equation you can substitute this. So substituting y equals to 3 in equation 1. Equation 1 में y की जगह पर 3 रख दे. So 3 8 जा 24. So 9x minus 24. So 9x equals to, so x equals to 36 upon 9 equals to 4. So what is the answer? Y equals to 3. So you can see once again, how will you do by elimination method? First you write both the equation in this form, ax plus by equals to c, if they are not in that form. After that, if you want to eliminate term of x, अगर हम x के term को eliminate करना चाहते हैं, तो उनके कोफिशिएंट्स को क्या बनाएंगे, इक्वल बनाएंगे. We will equalize their coefficients. Suppose if you want to eliminate the term of y, you will equalize the coefficients of y. Whether it is clear? Have you noted this? Now I am going to take one more question. Question number 5, second part. 2x plus x minus y upon 6 equals to 2. First you will simplify. How will you simplify? What will be LCM here? What will be LCM? Sir, 6. क्या होगा LCM? 6 होगा. So it will be 6 to the 12x. Sir. Equals to 2. When you will further simplify, what will you get? (13x minus 4). Minus 4 या minus y equals to 6 to the 12. 6 into 2, 12. This is equation 1. It's clear? Now in the same way, you will simplify the equation 2. You can see here, it is x minus 2x plus y upon 3 equals to 1. Now you take the LCM. So 3x minus, this thing will be in bracket.
equals to 1. Why will you put it in bracket? क्योंकि इसके पहले यहाँ माइनस साइन, यहाँ पर प्लस साइन था, इसलिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है. बट हियर देयर इज माइनस साइन. नाउ यू ओपन द ब्रैकेट. Sir, the board is blur. माइनस y. It's clear? So 3x minus x. Sir, the board is blur. वो तुम्हारी नेटवर्क प्रॉब्लम है. इन दिस साइड देयर इज नो प्रॉब्लम. यहां पर एकदम क्लियर है. नाउ सी हियर. नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस एंड दिस. इन दोनों को सॉल्व करना. यहां पर किसको हम इलिमिनेट करेंगे, x को या y को? One equation and other is this. किसको इलिमिनेट करेंगे? Y. Y. This is also minus y and this is also minus y. दोनों जगह पर माइनस y है. It's clear? Means their coefficients are 1. दोनों के कोफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल हैं, इसलिए हम y को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि यहाँ बराबर नहीं करना पड़ेगा. सो फ्रॉम 1 and 2, 1 is 2 is it's clear. Now see here. What will you do? You will add or subtract? You will add or subtract? बोले. Sir, add. Will subtract. And why we will subtract? क्योंकि minus y minus 1 same है, therefore we will subtract. When you will subtract, so it will be minus, it will be plus, and this is minus. So 13x minus x, 12x. This will be cancelled. 12 minus 3, 9. So 3 ja 3, 4 ja. Now this you can substitute in any one equation. Either you substitute in equation 1 or in equation 2. So I am substituting here in equation 2. So substituting. X equals to 3 by 4 in equation 2. Minus y equals to 3. So 3 you bring in left hand side. What will be LCM here? 3 minus 12. So what is y? Minus 9 upon 4. Y equals to minus 9 upon 4. आ गया समझ में? Yes, sir. Now see here.
Now you can see this question. Question number 3, first part. 15x minus 14y equals to 170. And 14x minus 15y equals to 150. Now see here. Here, if you see these two equations carefully, so you will find that coefficient of x in one equation, in first equation, is coefficient of y. जो नंबर यहां है वो अगली इक्वेशन में y के साथ है, और जो नंबर यहां है वो अगली इक्वेशन में x के साथ. Means the numbers have interchanged. So how will you do? So here we will adopt a special technique. एक स्पेशल टेक्निक अडॉप्ट करेंगे. यहां पर कोफिशिएंट्स इक्वलाइज नहीं करेंगे, या ऐसा नहीं करेंगे कि इसको हम 15 से मल्टीप्लाई करें और इसको 14 से. इसलिए we will not equalize the coefficients. First you will add both the equations and then you subtract. First you will add, जब ऐसा हो कि नंबर्स इंटरचेंज हो जाए, x का कोफिशिएंट y का बन जाए और y का कोफिशिएंट x का बन जाए in the next equation, then how will you add? How will you do? First you will add both equations. You will add both equations. So see here, 15x minus 14y. 14x minus 15y equals to 115. When you will add, तो add करने में साइन चेंज नहीं होते हैं. What will you get? 29x minus 29y. 232. Now 29 can be taken out. So x minus y equals to 232 upon 29. Now see here, if you multiply 29 को 8 से, 29 को 8 से multiply करोगे तो क्या आएगा? 230. So it will be 29 1 ja, 29 8 ja. Means what is first equation? X minus y equals to 8. This you have taken equation 3. Not 1, it is equation 3. ये क्या है? Equation 3 हो गई. Now see here. After this you will do the subtraction. एक बार ऐड करेंगे, एक बार subtract. So now see here, on subtracting, this is 14x 115. When you will subtract, so this is minus, this is plus, and this is minus. 15x minus 14x, it is x. Minus 14 plus 15, it is equal to how much? So y. Minus plus y. It will be equals to 2. Now it is very simple. One equation is x minus y equals to 8. Other is x plus y equals to 2. You solve them simultaneously. You will get the values of x and y. X minus y equals to 8 plus y equals to 2
When you will add, what will you get? 2x equals to 10. So x equals to 5. x की वैल्यू क्या आ गई? 5. x equals to 5 you put in any one equation. Equation 4. 5 plus y. 2 minus 5, that is minus 3. Y equals to minus 3. सबको समझ में आ गया? Have you understood? Yes, sir. Now there is one more question. Question number 8, first part. 3 upon x plus 4y equals to 7 and 5 upon x plus 6y equals to 13. It's clear? 3 upon x plus 4y equals to 7 and 5 upon x plus 6y equals to 30. So see here, अगर हम देखें यहां हम LCM नहीं लेंगे. You can see term of x is in 1 upon x. ये क्या है? 3 upon x. उसी तरीके से यहाँ भी क्या है? 5 upon x. It is written in the same pattern. Suppose you want to eliminate the term of x. यहाँ x के साथ क्या नंबर है? 3. यहाँ x के साथ क्या नंबर है? 5. इन दोनों का LCM कितना होगा? What will be 15. LCM? 15. मतलब हम क्या करेंगे? 3 को 15 बना दें. कैसे बनाएंगे 3 को 15? क्या करें? Sir, into 5. मल्टीप्लाई बाई 5 और 5 को 15 बनाने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 3. So see here, but multiplication you do in the whole equation. So equation 1 into 5. So 15 upon x 35. It is clear? हाँ मैं हाँ हाँ बोलिए. क्लास 3rd वाले के लिए क्या होगा? अच्छा अच्छा अच्छा. वैसे क्लास 3rd वाले का वो ले आएंगे कल. कल ले आएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स. हाँ हाँ. वो क्लास 3rd वाले के लिए वो कल वो डॉक्यूमेंट्स ले आएंगे कर. हाँ हाँ ये तो बात सही. हाँ हाँ ये बात तो सही है. चलो ठीक है ना. तो 5th वालों का भेज देंगे.
ना ये कहीं गांव में शायद पढ़ते थे। हाँ 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 हाँ, चलो ठीक है ना, ठीक। So 2y equals to minus, it is clear? 20y minus subtract. So y equals to minus 2. So I'm substituting y equals to minus 2 in equation 1. Equation 1 में y equals to minus 2 रखते, so it will be equal to what? Equals to 7. So 3 upon x minus 8 equals to 7. So 3 upon x equals to 15. So what will be x? x क्या होगा बताओ? 3 upon 15, that is 1 upon 5. X is 1 upon 5. ठीक है? सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Now see here. Question number 12, you can see. Can the following equations hold simultaneously? Question number 12. 3x minus y equals to 7. 11x plus 5y equals to 87. 5x plus 4y equals to 43. Now see here, in the question it is given, can the following three equations hold simultaneously? क्या ये तीनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली होल्ड कर सकती हैं? That you have to find. तो देख लो इसका मीनिंग क्या है? By using any two equations, you find out values of x and y. Suppose हमने इसको और इसको सॉल्व करके फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करते, उन वैल्यूज को इसमें रख दिया. इट इज क्लियर? x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, उनको इसमें रख दिया. अगर दोनों साइड बराबर हो जाएं, देन होल्ड साइमल्टेनियस. सो सी हियर, ऑन सॉल्विंग equation 1 and 2 simultaneously, so 3x plus 5y equals to 86. सपोज हमको y के टर्म को इलिमिनेट करना है, व्हाट विल यू डू? इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, एंड इसको 7 से. यू कैन सी हियर
we will multiply this whole equation with 5 and इसको 7 से, तो 5 7 जा कितना हो गया 35 and 7 5 जा कितना हो गया 35, 5 7 जा 35, 7 5 जा 35. So you can see here 5 into 3, 15x minus 35y equals to 35. And this is 77x equals to 609. Now you add them. When you will add, on adding what will be? ये और ये cancel. So what is x? X equals to so it will be equals to 7. Now on substituting in equation 1, you substitute x equals to 7 here. So 7 3 ja 21 minus 7y. So minus 7y equals to so y equals to 2. It's clear? Therefore, on substituting x equals to 6, 7 and y equals to 2 in you substitute these values here. अगर इनको रखने पर दोनों साइड्स बराबर हो जाएं, then equations hold simultaneously. Otherwise, they do not hold simultaneously. रखो 5 into 7. So 35 plus 8 equals to 40. So 43 equals to 40. Therefore, equations hold simultaneously. आ गया? सबको आया समझ में? Yes, sir. So now all of you solve remaining questions of this. It is clear? अब आज हम खत्म कर रहे हैं.